day after the Modi government unveiled what is being described by the government as GST reforms 2.0, reforms that have reduced the tax rates and simplified them, just two tax rates of 5% and 18%. The government has hailed the reforms, saying that taxes will have a major impact on consumers and the ease of living. The Prime Minister, who spoke on it today, slammed taxes under the previous UPA government and lauded what he said was the NDA's double dhamaka of GST and income tax reforms before Diwali. The opposition claims that they are the ones who've been banging on for the last 8 years, especially Rahul Gandhi, for rationalisation of taxes. In this credit war, first let's listen in to Prime Minister Modi. इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। साथियों, आजकल महंगाई की दर भी बहुत निचले स्तर पर है, नियंत्रण में है, और यही तो प्रो पीपल गवर्नेंस है। जब जनहित और राष्ट्रहित में फैसले लिए जाते हैं तब देश आगे बढ़ता है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं उसी भावना पर चलते हुए कल भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है, और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है, और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। So Prime Minister hailing the reforms that have taken place in the tax rate structure. Now this rate rationalization is the one reform that seems to have got a broad consensus. What's happening, as I said at the outset, is a fight to take credit for it from between the government and the opposition. Listen in to the reactions. We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs. All this will be effective 22nd September 2025, which is the first day of Navratri. A day after the GST Council decided to rationalize tax rates, keeping just 2 main slabs of 5% and 18% and 40% for sin goods, both government and opposition are claiming credit. The BJP is calling the tax cuts a gift from Prime Minister Narendra Modi ahead of the festive season. कांग्रेस का दोहरा चरित्र यह भी है कि काउंसिल में तो उनके नेता समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर राहुल गांधी उन्हीं फैसलों का विरोध करते हैं। जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को बम्पर गिफ्ट दिया है। The Congress claims the rationalization was first suggested by Rahul Gandhi, who had described GST as Gabbar Singh Tax. பல தலைவர்கள், பொருளாதார நிபுணர்கள் இது தவறு, இதை திருத்த வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். இதை உணர்ந்து தவறுகளை திருத்தியதற்காக நான் நன்றி சொல்கிறேன். 8 ஆண்டுகள் நடுத்தர மக்களை, ஏழை மக்களை கசக்கி பிழிந்தார்கள்.
The industry has given a thumbs up. From the industry perspective, we are very, very positive and bullish about this step the government has taken. I think government is very, very clear that they have to drive the consumption forward. The relaxation that they had given in income tax, then the repo rate reduction by the RBI, I think collectively all these steps will certainly drive the consumption way forward, and it will create a momentum of growth in the country, in the economy. I believe that this reform and the cut on GST for small cars particularly, and to some extent for bigger cars, will result in the growth of the car industry, which has been stagnating, as you know, for the last 2-3 years. That growth will go back to the original 7 to 8% which we were experiencing in the past. The GST rationalization comes at a time when the industry is facing global trade headwinds, and fresh tariff hikes by the US have raised concerns about India's export prospects. Analysts expect the boost in domestic consumption to offset some of its impact. Bureau Report, India Today.